हेलो गाइस, वेलकम टू द कृष्णा कुमत्सव। कृष्णा कुमत्सव में आप सबका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने HPSC AP कॉमर्स 2019 के PYQ किए थे 51 तक। आज हम उससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो 51 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 52 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी इक्वल टू एसेट्स टर्नओवर मल्टीप्लाई प्रॉफिट मार्जिन। एसेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करते हैं? एसेट टर्नओवर इक्वल टू नेट सेल्स ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नेट प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स। क्वेश्चन नंबर 53 है, द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द बिजनेस एनवायरमेंट is environmental analysis. Question number 54 है, according to brand resonance model, match the stages of brand development with branding objectives at each stage. Brand development और brand objective. Brand development है identity, deep brand awareness. Second, meaning, point of verity and difference. Third है response, positive accessible reactions. Relationship, intense active loyalty. Question number 55 है, a marketing system comprises the producers, wholesaler and retailer acting as a unified system is known as vertical marketing system. Question number 56 है, a method in which the company charges a fairly low price for a high quality offering value pricing. Question number 57 है, Booz Allen and Hamilton has identified 6 categories of new products. Select the wrong one. तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, न्यू टू द वर्ल्ड प्रोडक्ट, ये सही है। नाउ प्रोडक्ट लाइंस, न्यू प्रोडक्ट लाइंस, एडिशन टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइंस, रीसेगमेंटिंग। तो इसका आंसर होगा रीसेगमेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 58 है, ABC are partners in a firm. If a withdraws rupees 3000 at the beginning of each quarter, what will be the interest on drawings charged to A at the end of the year if the rate is 12% per annum? तो 3000 वो विदड्रॉल कर रहा है क्वार्टरली, तो 3000 इंटू 4 कितना हुआ? 12000। और कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 12% पर एनम, तो 12000 इंटू 12 इंटू 100 इंटू 7
7.5 अपॉन 10 इंटू 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 900। क्वेश्चन नंबर 59 है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। असेसमेंट बाय रिजल्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 60 है, द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशंस वाज propounded by Herzberg. The two-factor theory of motivations was propounded by Herzberg. 16th question है, which one of the following is the of the job training method? Syndicating. Which of the following is the of the job training method? Syndicating. Question number 61 है, arrange the elements of the 5 maturity levels of people capability maturity. Model of a human resource management. Initial level, defined level, managed level, optimizing level, predictable level. तो सबसे पहले आएगा इनिशियल लेवल, फिर आएगा मैनेज, फिर डिफाइंड, फिर प्रिडिक्टिबल, फिर ऑप्टिमाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लग्जरीज हैव इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड लेस देन 1। Luxuries have elastic demand greater than 1. Question number 63 है, the relation between AR, MR, AR mean average revenue, MR mean marginal revenue, and elasticity of demand can be expressed as MR equal to AR into E minus 1 upon E. Question number 64 है, marginal cost is closely related to variable cost. Next question है, from the following which is not a cause of increasing return to a factor? Not a cause of increasing return to a factor. तो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ये है फुलर यूटिलाइजेशंस ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, ये भी इंक्रीजिंग रिटर्न फैक्टर है। डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशंस, ये भी सही है। तो जो नहीं है इस इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, तो उसका आंसर है बियॉन्ड ऑप्टिमम कैपेसिटी यूजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी इक्वल टू एसेट्स टर्नओवर प्रॉफिट मार्जिन। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी इक्वल टू एसेट टर्नओवर इक्वल टू प्रॉफिट मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम इज नॉट टैक्स्ड until it is remitted to the parent company as a dividend. इसका आंसर है टैक्स डेफरल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रेजरी बिल 182 डेज टीबी ट्रेजरी बिल 14 डेज ट्रेजरी बिल ये भी सही है 364 डेज डे ट्रेजरी बिल ये भी सही है 62 डे ट्रेजरी बिल ये नहीं है ये गलत है तो इसका आंसर होगा 62 डेज ट्रेजरी बिल नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म रिग्रेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय सर फ्रांसिस गैल्टन which scale measures the psychological meaning of an attitude object using bipolar objectives semantic differential scale next question है the variations in measures due to some known or unknown influencer that cause the scores to lean in one direction more than another is called systematic variance. Standard error is standard deviation of the populations. Variance of the populations. Variance of the sampling distributions. Standard deviation of the sampling distribution. तो स्टैंडर्ड एरर कौन सा इसमें स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डाटा एलिमेंट इन अ डाटा फ्लो मे बी एन इंटीगर नंबर मे बी अ रियल नंबर मे बी अ बाइनरी मे बी इमेजिनरी तो इसका आंसर होगा मे बी इमेजिनरी डाटा एलिमेंट इन अ डाटा फ्लो 1 2 3 ये तीनों जो है वो सही हैं और फोर्थ जो है वो गलत है नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्ट ऑफ assigning values of credit instruments by estimating or assessing the solvency and expressing them through predetermined symbols is called credit rating. Next question है it is a financial institutions which manages the collection of accounts receivables of the company on their behalf and bears the credit risk associated with those accounts. What is it? P. फैक्टर्स इसका आंसर है फैक्टर्स व्हाट इज इट फैक्टर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग मर्चेंट बैंक्स डू कैपिटल मार्केट असिस्टेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी was set up in 1990 और IDIB कब 1964 में नेक्स्ट क्वेश्चन है MSP policy is an important step initiated by the
government to improve agriculture marketing system. What is MSP? Minimum support price. Next question है, an investment that gives the investor a controlling interest in a foreign company is called FDI, foreign direct investment. Next question है, the theory about the relationship between inflation and interest rates is known as Fisher's effect. The theory about the relationship between inflation and interest rate is known as Fisher effect. Next question है, the net present value of a financial decision can be defined as the difference between the present value of cash inflows and the present value of cash outflows. Next question है, the T distribution or T test is used when the sample size is 30 or less and the population's standard deviation is unknown. The T distributions or T test is used when the sample size is 30 or less and the population's standard deviation is unknown. Next question है, with reference to banking, IMPS refers to immediate payment service. IMPS refer to immediate payment service. Next question है, the dash refer to the cash which banks have to maintain with the RBI as a certain percent of their demand and time liabilities. Cash reserve ratio. The cash reserve ratio refer to the cash which banks have to maintain with the RBI as a certain percent of their demand and time liabilities. Next question है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI, ये तो हो गया है, दोबारा हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए फाइनेंशियल सिस्टम टू ग्रोथ goes beyond increasing prior saving based investment fear related to credit creation theory. Next question है, who headed the NABARD regional office? Chief General Manager. The law of diminishing returns refer to an eventual fall in marginal product of the variable factor. Next question है, if an amount is spent in the current years but against it revenue will be earned in the next year, then the amount should be carried forward to the next year. Next question है, a debit balance shows money is owing to the firm, money is owing to some person. See, the firm has lost money or has incurred some expenses. तो इसका आंसर होगा A and C.
Next question is secret reserve are not permitted. This statement is related to disclosure. From the following situations, which is not a situations involved in product mix pricing, captive product pricing, two part pricing, by प्रोडक्ट प्राइसिंग, चैनल प्राइसिंग। तो इसका आंसर होगा चैनल प्राइसिंग। Thanks for watching. Keep like, share and subscribe this channel.